सो नाउ यू सी सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर। यस, देखो इसमें हम लोग जैसे प्रीवियस में हम बोला था जूस मिसिंग बोल के, ठीक है, इसमें कुछ फ्रूट्स डाला है, ठीक है, और इसमें क्या निकलता है, जूस निकलता है। तो ये मशीन ने जूस देता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है गाइस, जूस मशीन। यस, और कुछ देखो मिक्सर मशीन भी होता है इस टाइप करके, इसमें कुछ डालो मसाला का डालो, इसमें क्या हो जाता है, मसाला को पूरा मिक्सर करके क्या करता है, कुछ पेस्ट बना देता है, ठीक है। तो देखो ये मशीन ने क्या करता है, कुछ मिक्सर दे देता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, मिक्सर। इसको जूस, इसने जूस देता है तो जूस मशीन बना दिया। तो सेम वे कुछ फंक्शन में भी क्या होगा, कुछ चीज़ देगा, उसका हिसाब से, जैसा मान लो कुछ सपोज x दे दिया और उसका x का पोलिनोमियल बना दिया, x दे दिया उसको स्क्वायर बना दिया, x दे दिया फंक्शन में x डाल दिया, तो फंक्शन वो x कैरेक्टर का ऊपर डिपेंड करके फंक्शन को कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्लासिफाइड कर गया है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है, आइडेंटिटी फंक्शन। यस, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, देखो ए फंक्शन f फ्रॉम x टू x is an identity function if this is happen, f of x is equal to x for each x belongs to, yes, x, this is x belongs to capital X, yes, not a, okay। So you see here कोई भी एक function ले लो from x to x, then this function is said to be identity if we put x, इसमें x से निकल जाएगा, दैट मीन्स जो चीज़ हम लोग डालेगा ना वही चीज़ निकल जाता है, देन द फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। एंड इन जनरल आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग I से डिनोट करता है, ठीक है। I मीन्स हियर आइडेंटिटी फंक्शन, सो हियर इन प्लेस ऑफ f वी पुट हियर I। यस गाइस, सो आइडेंटिटी फंक्शन को ऐसा करके लिखेगा, ठीक है। आई एक्स देने से क्या आ जाता है, एक्स ही दे जाता है बस। सो दिस इज आवर आइडेंटिटी फंक्शन एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन गाइस। यू सी the graph of this identity, here you see, here we consider here this is our y-axis, this is our x-axis, then this will be the graph of this identity functions, and you see this graph of this identity function is nothing, this is a straight line and which make an angle 45 degree with the x-axis as well as the y-axis also। yes, both the axis, देखो x-axis का साथ भी 45 डिग्री करेगा और इसमें y-axis का साथ भी 45 डिग्री करेगा, ठीक है। So the graph of identity function, you see here, graph of the identity function is a straight line that makes an angle 45 degree with both x and y axis respectively. All points on this line have their x and y coordinates equal, ठीक है। ये जो lines है ना, इसमें कोई भी एक point ले लो, all the points have same x and y coordinate। yes, so this is the graph of identity function. So hope this video is helpful for you, so please like and subscribe to my channel. Okay, bye bye.